Hello students, welcome to Gitishree Study Zone. So आज हम स्टार्ट करबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सो फर्स्ट देखिबा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टर्म टा से जिनसटा कौन? The work done by the external force against the electric field increases electrical potential energy of the charge that is moved. इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट रे जो आमर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करा जायथिबा वर्क डन चार्ज रो कौन पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करे एंड कौन करे दैट इज मूव्ड. ठीक अच्छे कौन करे ना द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स against the electric field increases electrical potential energy of the charge that is moved. electric field against रे हमर जो external force द्वारा work done होई थाए सी चार्ज रो कौन हुए ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कौन बढ़ाई थाए. ठीक अच्छे तो ठीक कौन ना यू बी एटा कौन यू होची आम कौन यू रो पोटेंशियल रो सिंबल होची यू. यू ऑफ बी माइनस यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल यू इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ ए बी. एठी मु लिखि देछि दिस इज ए एंड दिस इज ए बी. सो एठी कौन ना यू बी पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल होचे डेल यू इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ ए बी. तापर देखिबा में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी and electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B. एठी देखो पिला माने B पॉजिटिव चार्ज कैरी करछि एंड A नेगेटिव चार्ज कैरी करछि. एडो देखो एठी B हमर पॉजिटिव चार्ज कैरी करछि एंड A हमर नेगेटिव चार्ज कैरी करछि. सो एठी कहूछि जे electric field is defined as the work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium. ठीक अच्छे तेल दैट इज कौन हम चार्ज को इक्विलिब्रियम रे रखिला बेले गोटे पॉजिटिव 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरी करबा पई करा जाउथिबा वर्क डन हो कौन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ को आम कह पिला माने कौन ना V इज इक्वल्स टू W अपन Q. इन अदर वर्ड्स आमे मध्य कहि परिबा जे V इज इक्वल्स टू E अपन Q. ठीक अच्छे एठी हमर कौन एठी आमे गोटे जानिले जे V इज इक्वल्स टू W अपन Q. इन अदर वर्ड्स और आमे आ गोटे जानिले V इज इक्वल्स टू E अपन Q. अच्छा एठी V कौन एठी V कौन पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज भी कह परबा V बट एठी आमे जेतु इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढुचे तो आमे पोटेंशियल डिफरेंस विषय रे कहबा. तो एठी V होचे हमर पोटेंशियल डिफरेंस एंड W कौन वर्क डन एंड एठी जो इन अदर वर्ड्स रे V इज इक्वल्स टू E अपन Q लिखिचे आमे एठी E होची एनर्जी एंड Q इज चार्ज. ऑल क्लियर. एठी से कहूचे एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जिनसाटा कौन ना चार्ज को जिते बड़े आम इक्विलिब्रियम पोजिशन रे रखिला बेले आमर जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करिया पई जतिके वर्क डन हुए सेटा होचे हमर पोटेंशियल डिफरेंस. एंड आम जदि तार फॉर्मूला को जिबा पोटेंशियल डिफरेंस रो फॉर्मूला कौन
V is equals to W upon Q. एठी V होची potential difference and W होची work done, Q होची charge and एठी जो आम लिखिले V is equals to E upon Q, E मध्य energy and Q मध्य charge. ठीक अच्छे बुझी पाल समस्ते ठीक अच्छे. नेक्स्ट स्लाइड को आम जीवा यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. फर्स्ट आम पढ़ा एसआई यूनिट्स. ठीक अच्छे कौन पढ़ा एसआई यूनिट. यूनिट ऑफ पोटेंशियल इन एसआई यूनिट इज वोल्ट. कौन वोल्ट. पोटेंशियल एसआई यूनिट हूँ कौन वोल्ट, जहाँ को आम भी सिंबल रे लिखि था. ठीक अच्छे तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इन एसआई इज वोल्ट. सो वी नो दैट Q is equals to 1 coulomb and W is equals to 1 joule. एटा हम यूनिट पढ़ुचे पिला माने टिके ध्यान रे देख. यूनिट बहुत इंपोर्टेंट एंड एग्जाम रे बहुत थोड़े यूनिट भी आसे. एनर्जी रे यूनिट कौन, पोटेंशियल रे यूनिट कौन, वर्क डन रे यूनिट कौन, जदि एटा तुम बुझी थिबो ताले एग्जाम रे तुम पई इजी हबो. ठीक अछि तो देख माइंडफुली. सो इन एसआई यूनिट पोटेंशियल रो एसआई यूनिट कौन वोल्ट. दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. एटा मन रख समस्ते. पोटेंशियल रो एसआई यूनिट होची वोल्ट एंड वी नो दैट Q is equals to 1 coulomb and W is equals to 1 joule. आमे पढ़िथिले पोटेंशियल डिफरेंस रो फार्मूला कौन V is equals to W upon Q. एटा आमे पढ़िथिले जे V is equals to W upon Q. तो एठी W केते 1 joule divided by Q केते 1 coulomb. तो ये V होची आमे W एठी नेचे 1 जूल एंड Q नेचे 1 कुलम. तो हे गला हमर 1 जूल अपॉन 1 कुलम. जदि एटा को आमे लेखिबा ताले हे जीवनी एति की जे 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल कुलम इनवर्स. कारण कुलम टा तळे अछि तो सेटा ऊपर को हे गले कुलम इनवर्स हे जीवो. तो डेरिवेशन टा मन रख पिला माने एग्जाम रे भी पचारे पोटेंशियल रे यूनिट कौन जदि तुम जानिथिबो लिखि दे परिबो जे यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट एंड वी नो दैट Q is equals to suppose 1 coulomb and W is equals to 1 joule हेला. ठीक अछि तो एठी हमर कोन हि जिवो. एठी पिला माने देखो आमे जो V is equals to W upon Q फार्मूला नेजे एठी W वर्क डन रो यूनिट मध्ये जूल एंड चार्ज रो यूनिट होची कुलम्ब. सेथि पई आमे एठी Q is equals to 1 कुलम्ब नेजे एंड वर्क डन is equals to 1 जूल नेजे. एठी कंफ्यूज होबार किछि भी नाही. एठी आमे यूनिट पढुचे जेमिति पोटेंशियल रो यूनिट होची वोल्ट. आमे जानिथिले जे फार्मूला होची कोन को फार्मूला आमे जानिथिले ना पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कोन वर्क डन अपॉन चार्ज. एटा होची वर्क डन रो यूनिट कोन जूल एंड चार्ज रो यूनिट होची कुलम्ब. सेति पई आमे एठी चार्ज को कुलम्ब 1 कुलम्ब नेचे और वर्क डन को जूल नेचे एंड V is equals to जेहेतु W upon Q तो W रो यूनिट एछि 1 जूल एंड Q रो यूनिट एछि 1 कुलम्ब. दैट्स व्हाई एठी 1 केते V माने पोटेंशियल डिफरेंस केते गला जूल इनटू कुलम्ब इनवर्स. ठीक अछि क्लियर. ओके हमरे एसआई यूनिट सरला एबे पढिबा हमें सीजीएस यूनिट. अच्छा सीजीएस सिस्टम रे कोन अछि. There are two types of units for potential in CGS system. ESU of potential, electrostatic unit, electromagnetic unit. ठीक अछि दुईटा यूनिट विषय आमे पढ़िबा. तमन नियति सुनिथिबो स्टेट वोल्ट एंड एव वोल्ट.
एठी ESU of potential और ताको आमे मध्यम कहू stat volt. So one electrostatic unit of potential is one urge divided by one electrostatic unit of charge. एटा मन रख पिला माने one electrostatic unit of potential केते मध्य एग्जाम रे पचारि दबो 1 marks question रे 1 org upon 1 electrostatic unit of charge and EMU or of potential or av volt मध्य आमे यहाँ को कही थाउ तो electromagnetic unit of potential or av volt केते 1 org upon 1 electromagnetic unit of charge बुझी पालो ओके. So relation between volt, av volt and stat volt. अच्छा या अंक भितरे तुम मान माइंड रे निहाती क्वेश्चन आसथिबो आपण कोन av volt कहउचंती stat volt कहउचंती कोन से जिंस एठी आमे पढिबा से जिंस कोन ने रिलेशन बिटवीन volt, av volt and stat volt. देखो एठी फास्ट आमे पढिबा रिलेशन बिटवीन volt and stat volt. ठीक अच्छे एग्जाम रे बहुत थर मध्य क्वेश्चन भी पिला आसी पिला माने जे 1 वोल्ट केते स्टैट वोल्ट एंड 1 वोल्ट केते एव वोल्ट एटा सर्ट क्वेश्चन रे आसे पिला माने बहुत थर एग्जाम रे आसी एटा मन रख जे 1 वोल्ट होची 1/300 स्टैट वोल्ट एंड जदि आमे जिबा रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड एव वोल्ट को then 1 volt is equals to 10 to the power 8 एव वोल्ट. ठीक अच्छी मन रहिला कौन 1 वोल्ट केते स्टैट वोल्ट 1/300 स्टैट वोल्ट 1 वोल्ट केते एव वोल्ट 10 to the power 8 एव वोल्ट. सिंपल समस्त मन रखिया पई ट्राई करो एग्जाम रे क्वेश्चन आसी जिवो यार किछि गारंटी नहीं तो एटा मन रखि थाओ समस्ते. ठीक अछि तो कोन आउथरे मो कहि दोछि 1 वोल्ट केते स्टैट वोल्ट 1/300 स्टैट वोल्ट एंड 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 to the power 8 एव वोल्ट. सो एटा होछि रिलेशन बिटवीन एव वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट. ठीक अच्छे नेक्स्ट स्लाइड को जीवा में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज रो पोटेंशियल एनर्जी विषय आम ए डिस्कशन करबे. ठीक अच्छे कौन अच्छे देखने का वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एट ऑल द पॉइंट्स अराउंड अ सोर्स चार्ज क्यू. गोटे सोर्स चार्ज क्यू रा सबु आडे कौन है सबु ऑल द पॉइंट्स रे कौन करे तार ऑल द पॉइंट्स रे गोटे सोर्स चार्ज रो ऑल द पॉइंट्स रे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करे. ठीक अच्छे एंड एवरी पॉइंट इज कैरेक्टराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हिच गिवन बाय केते हबो बहुत सिंपल पिला माने v इज इक्वल्स टू एडा होछ गोटे डेरिवेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r. तो ये कहना कौन ना we know that the electric field exists at all the points around a source charge q and every point is characterized with electric potential which is given by केते v is equals to 1/4 pi epsilon naught into q upon r. ठीक अछि एटा हम बुझि पालो. ता पर पॉइंट ता कोन if instead of bringing a unit of charge we bring a charge q from infinite to that point work done w in doing so is given by kete w is equals to kete q into v. q होची charge and v is potential energy. तो वर्क डन एठी केते हला जते बेला हमें गोटे चार्ज को कोन करबा आनिबा इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट रू. सो एठी वर्क डन केते हे जिवो एठी वर्क डन q into v. q is charge and v is potential difference.
potential energy और W and charge work done एठी केते ही जबो 1/4 pi epsilon naught Q into Q dash upon R ठीक अछि इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन इक्विपोटेंशियल वर्ड रो आम गोटे जिनस बुझा पड़ुची इक्वल पोटेंशियल इक्वल होची समान एंड पोटेंशियल सरफेस रो जोठी पोटेंशियल टा इक्वाली थिबो सेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस ओके ठीक अछि हेले देखिबा कोन अछि इक्विपोटेंशियल सरफेस we know that the potential V at any point in an electric field re any point re potential V is given by kete V is equals to 1/4 pi epsilon naught K into Q upon R अच्छा सब तो बुझी पारलो कि Q कौन और R कौन एठारे R होची distance of the point from charge Q where R is the distance of the point of from charge Q एठी Q होची charge and R होची distance बुझी पारलो so equipotential surface एठी हम जानले जे the potential V at any point in an electric field is given by एटा होची इंपोर्टेंट डेरिवेशन टा पिला माने ए फार्मूला टा मन रखि दबो पोटेंशियल V is equals to 1/4 pi epsilon naught K Q upon R ए फार्मूला अनुसार एग्जाम रे न्यूमेरिकल्स आसे आमे आगो को करिबा तो ए फार्मूला टा मन रखि था न्यूमेरिकल्स कला बेले हमको इजी हबो तो एठी देखिबा हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कोन An equipotential surface is defined as the locus of all the points in the medium at which the potential due to a charge distribution is same. कौन मीडियम रा सबु पॉइंट गुड़िकर लोकस जोठी फोकस मीडियम रा सबु पॉइंट गुड़िकर लोकस जोठारे कौन हुए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेतु पॉसिबिलिटी समान थाए मुझे कहती ना आमको इक्विपोटेंशियल वर्ड रो निहाती तो आमको बुझा पड़ी जावा दरकार जे इक्यू होची इक्वल जोटे कि समान एंड पोटेंशियल सरफेस रा सबुआडे कौन थिबो पोटेंशियल इक्वली थिबो सेटा होची इक्विपोटेंशियल सरफेस एतिकी आम माइंड रे आसी जिबा दरकार इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल माने कौन इक्वल पोटेंशियल सरफेस रा सब जगह रे हमर पोटेंशियल इक्वल थिबो एटा हम माइंड को आसी जिबा कथा इक्विपोटेंशियल सरफेस रा माने तो एठी कौन कहला सेया जे द इक्विपोटेंशियल सरफेस is defined as the locus of all the points in the medium at which the potential due to a charge distribution is the same. medium रा सब पॉइंट गुड़िकर लोकस जोठी अछि सब पॉइंट गुड़िकर लोकस जोठी अछि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हेतु कौन हुए पॉसिबिलिटी समान थाए संभावना समान थाए तो एठी जतिकी चार्ज अछि एठी भी सेतिकी चार्ज एठी भी सेतिकी चार्ज एठी भी सेतिकी चार्ज सरफेस रा सबुआडे इक्वाली पोटेंशियल अछि पोटेंशियल सरफेस रा सब जगह रे समान एठी जतिकी पोटेंशियल एठी भी सेतिकी पोटेंशियल एठी मध्य सेतिकी पोटेंशियल एठी मध्य सेतिकी पोटेंशियल तो सरफेस रा सब जगह रे इक्वल पोटेंशियल अछि सेथि पई आमे ए सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोली कही थाउ बुझी पारलो समस्ते ओके नेक्स्ट स्लाइड को जिबा द शेप ऑफ द सरफेस डिपेंड्स अपॉन कौन सरफेस रो शेप को कौन हमरा डिपेंड करे फर्स्ट जो जिनसटा डिपेंड करे सेटा होची फॉर ए पॉइंट चार्ज
अच्छा shape of the surface point charge कहीं डिपेंड करे. If the charge distribution is a point charge and the medium is isotropic, the equipotential surface will be spherical. बुझिपाल. If the charge distribution is a point charge and the medium is isotropic, the equipotential surface will be spherical. जदि मीडियमटा आइसोट्रोपिक होइतिबो ताले इक्विपोटेंशियल सरफेस कोन होइतिबो विल बी स्फेरिकल. The various equipotential surface corresponding to different distances from the charge Q. ସେଥିପାଇଁ सरफेस डिपेंड्स करे शेप उपरे. जेमिति कि आमे एठी जानिले जे मीडियम जदि आइसोट्रोपिक हेतिबो ताहेले निश्चित भाबरे द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल. For a pair of point charge, पुणी कौन? The shape of equipotential surface for a pair of charges may be of similar or dissimilar nature is determined by the algebraic sum of individual potentials produced by the two charges at different points. बुझिपारले समस्ते. इठी कौन ना फॉर अ पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज माने होची मे बी सिमिलर और डिसिमिलर इन नेचर. एठी हमर सरफेस डिपेंड्स करबो ए शेप ऊपर. सिमिलर होई थाई पारे, डिसिमिलर मध्य होई थाई पारे. लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. कंसीडर सपोज आमे कंसीडर करबा दुटा पॉइंट P1 and P2 situated on the surface रे अछंती P1 and P2. ठीक अछि. सपोज एडा होची P1 पॉइंट एंड एडा होची P2 पॉइंट. आमे दुटा पॉइंट कंसीडर करबा. If V1 V2 be the potential at point P1 and P2 respectively. ठीक अछि. अच्छा P1 पॉइंट रो पोटेंशियल होची V1 एंड P2 पॉइंट रो पोटेंशियल होची P2. ठीक अछि. देन एठी कोन हबो? Lines of force are always perpendicular to the equipotential surface. That's why एठी हमर हे जिवो V1 is equals to V2 or V1 minus V2 is equals to 0. कौन है बुझिपारूनी. ठीक अच्छे. आउ हम कही दूचे लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सपोज आमे दुटा पॉइंट कंसीडर करबा दैट इज पॉइंट 1 ता ना होची P1 एंड दैट इज पॉइंट P2. ठीक अच्छे. पॉइंट P1 रो पोटेंशियल निजबा V1 एंड पॉइंट 2 रो पोटेंशियल निजबा V2. अच्छा लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. एठी लाइन्स ऑफ फोर्स माने सब बेले परपेंडिकुलर होछन इक्विपोटेंशियल सरफेस को. सेथि पई कोन हबो? सेथि पई एठी V1 इज इक्वल्स टू V2 और आबे मध्य लिखि परिबा कोन इटा को ना V1 minus V2 is equals to 0. बुझिपालो समस्ते. Since potential difference between any two points is the work done in taking a unit positive charge from one point to another. Fourth point कौन? Plane equipotential surface for a uniform field. Suppose in the case of uniform electric field which is represented by a set of parallel lines of force, the equipotential surface is a plane perpendicular to these lines. एटा तो आमे जानि in case of uniform electric field which is represented by a set of parallel lines of force. So the equipotential surface is a plane perpendicular to these lines. Again, we know that the magnitude of electric field intensity kete. The magnitude of electric field intensity kete? E. Electric field intensity होची हमरा E. अच्छा E is given by kete हिजबो?
केते E is equals to minus dv upon d कौन L, where dv is the difference of potential between 2 points and dl is distance. बुझी पारल पिला माने for a particular value of potential dl is inversely proportional to 1 upon e. The distance dl between two equipotential surfaces having a constant difference of potential varies inversely as the strength field in that region. So एठी आमे बुझिले कोन we know that the magnitude of electric field intensity कोन E ठीक अछि E is equals to formula होछि कोन minus dv upon dl एठी dv कोन dv होछि the potential difference between 2 points and dl कोन distance आकु जदि आमे mathematically कहबा तो where dv is the difference of potential between 2 points separated by a distance dl and ताको mathematically represent कले हमरा ए जिंसटा आसीबो E is equals to minus dv upon dl बुझि परलो समस्ते ओके वीडियोटी जदि भल लगी थाए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करबा को बिल्कुल भी भूलिबेनी थैंक यू फॉर वाचिंग